ऑब्वियसली बहुत लोग कैपेसिटी डाल रहे हैं. आई थिंक द जिंदल्स आर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, बट आई वुड बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनीज एट दिस पॉइंट, अनुज, क्योंकि अभी एक लीप ऑफ फेथ है. अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी आके कहा है कि ही वांट्स मोर कन्वेंशनल आइस व्हीकल्स टू सेल एज अपोज टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो आई मीन देयर इज डेफिनेटली अ स्पेस, बिकॉज जीरो कार्बन एमिशन की बात हो रही है ग्लोबली. सो देयर इज डेफिनेटली अ केस, बट आज की डेट में जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, अनुज, जो प्राइवेट कैपेक्स के अनाउंसमेंट्स हैं, जो काफी हद तक ग्रीन एनर्जी में भी थे पिछले फाइनेंशियल ईयर, वो करीबन 20-25% डाउन है. सो आई डोंट नो इंक्रीमेंटली यहाँ से कितना ऑन स्ट्रीम आएगा एंड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज कितना होगा. सो उसके चलते आई वुड प्रोबेबली बी more inclined to stay with traditional energy companies, or even look at companies that are doing work for some of these green energy companies, like say, or alternate energies like batteries and so on and so forth. जैसे Neogen Chemicals, which is into bromine and things like that. तो ऐसे कुछ नाम हैं जो जहन में आते हैं, but not too much of a stock market play from here on current evidence. बिल्कुल, स्टॉक मार्केट के लिए शायद इतना नहीं, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अब रिएक्ट कर रहे हैं. प्रकाश, स्ट्रॉन्गर एनबीएफसी में बहुत अच्छे मूव्स आए थे ये आरबीआई के स्टेप्स के बाद. श्रीराम और चोला ने लीड किया उसको. बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई हिट करने की तैयारी कर रहा है, 52 वीक हाई पे तो ऑलरेडी आ ही गया है. फ्राइडे को पॉलिसी भी है आरबीआई की, बजट के तुरंत बाद. तो बजट सैंडविच है दो आरबीआई एक्शन के बीच में. एक रेट कट से पहले रेट कट, और एक इन गवर्नर साहब के अंडर पहली पॉलिसी. एनबीएफसीज पर अब आपका क्या ओपिनियन और आपकी टॉपिक्स क्या होंगी यहाँ पर? सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव. उसका रीज़न है कि एनबीएफसीज में जो स्ट्रेस है वो बहुत डिफाइंड है. वो एमएफआई में है, पर्सनल लोन वाले बुक्स पे है. बट अगर आप जो एनबीएफसी देखें जो हाउसिंग फाइनेंस की तरफ फोकस है, हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ग्रोथ नहीं आ रही है. सो ग्रोथ हासिल करने के लिए जो कॉस्ट एफिशिएंसीज बिल्ड करने के लिए जो चेष्टा करनी पड़ी है कंपनीज को, उसकी वजह से आपको नंबर्स बहुत ड्रामेटिकली इंप्रूव होते हुए नहीं दिख रहे. तो कंपनियों ने क्या किया है कि ये मौका उसका उपयोग इसमें किया है कि बुक्स को क्लीन अप कर ले. जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस देखिए तो सारी बुक रीस्ट्रक्चर हो गई. कैनफिन होम देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखिए. सो आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस बाय एंड लार्ज एक स्टेडी ग्रोथ वाला एरिया रहेगा. एनबीएफसीज में आपको बेस्ट इन क्लास में ही जाना पड़ेगा अनुज. यू डोंट हैव अ चॉइस. मतलब आप या चोला के साथ जाइए या श्रीराम के साथ जाइए, तो एटलीस्ट यू नो कि जब ग्रोथ आएगी, क्रेडिट ग्रोथ बैंक्स को आएगी, एनबीएफसीज को आएगी, तो उसमें इनका पार्टिसिपेशन अच्छा खासा रहेगा. सो आई एम पॉजिटिव, बट आई वुड स्टिल प्रेफर बैंक्स. आप छोटे मझोले बैंक ले लीजिए, वो एनबीएफसी जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके पास, लेकिन जैसे डीसीबी ले लीजिए. बट यस, इट्स अ पॉजिटिव स्पेस, बट लेट्स सी बजट के बाद देखते हैं कोई अगर नया निकल के आता है. ओके, चलिए एक और खास मेहमान हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ अब सुशील केडिया जुड़े हैं, जिन्होंने याद रखिएगा एक बहुत ही बोल्ड कॉल दी थी पिछले मंगलवार को कि हम 30,000 निफ्टी पर इस साल हिट करेंगे, और बजट एक स्टेपिंग स्टोन होगा उसके लिए. सुशील जी, गुड मॉर्निंग. और बताइए, इस समय मार्केट तो पिछले 4-5 दिन में वो आपके उस ट्यूसडे की कॉल के बाद अच्छा चला है. 700 पॉइंट तो उसमें से आ चुके हैं जो आपने व्यू लिया था. क्या व्यू रहेगा अब यहाँ पर, और बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? तो देखिए, बजट से जो एक्सपेक्टेशंस है वही बाजार के भाव में रिफ्लेक्ट होते हैं. जिस प्रकार की निराशा, हताशा और एकदम से दुख जाहिर था चार्ट्स पे, वो पूरा रंग बदल गया, माहौल बदल गया. पिछले 5 दिन में लगातार भाव ऊपर है. तो अब बजट से जो धारणाएं शेयर बाजार ने लगा ली हैं, चार्ट्स ये कह रही हैं कि जो भी हमें डर था बजट से वो पूरा हो चुका. बाजार ने अपनी एक नई चाल को पकड़ लिया है, और अब बजट के भाषण के बीच में जो भी अगर वॉलेटिलिटी आ सकती है उससे सावधानी के लेवल्स पहले जोड़ ले. तो अगर 23,500 के ऊपर 25,000 का अगला पड़ाव है, और फिर 25,000 क्रॉस हो जाएगा तो 27,000 वो क्रॉस हो जाएगा तो 30,000 वो देखेंगे आगे जैसे जैसे होता जाएगा. आज के दिन के लिए हमने अपने निवेशकों को जो बताया है कि अगर 300 पॉइंट भी कोई झटका दे दे निफ्टी भाषण के बीच में, तो मौका होगा दबोच के माल लेने का. तो अगर 23,200 के नीचे वापस कोई बाजार चल पड़ेगा तो फिर हम एक बार सरेंडर करेंगे. और उसी तरह से बैंक निफ्टी में 5-6 हजार पॉइंट कमाने की इच्छा है, और ऑलरेडी इतना नीचे से बढ़ गया है. तो 1001 पॉइंट का झटका अगर बैंक निफ्टी दे देता है कोई कारण से, तो मेरे को लगता है लॉटरी की टिकट होगी और माल लेना चाहिए. तो लॉटरी की टिकट लगेगी या नहीं, ये तो खैर बात की बात है. लेकिन क्या लीड करेगा इस मूव को, एक बार फिर डिस्कस करते हैं. क्या बैंक्स लीड करेंगे, क्या लार्सन लीड करेगा? ऑब्वियसली एक हो सकता है बुफे की टाइप हो, हर
आप थोड़ा थोड़ा थाली में सब कुछ डालना चाहें, लेकिन सबसे पहले थाली में क्या डालना चाहेंगे? देखिए, दो तरह के प्रश्नों में मैं बांटना चाहूंगा इस चीज को। एक, अगर आज सारी की सारी चीजें अगर उखड़ जाती है तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जब बजट की यूफोरिया अगर कोई आ जाती है बजट में, वो यूफोरिया शांत होने के बाद कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि लार्सन एंड टूब्रो वापस 3,000 भी मिलने की रिस्क है। तो अगर वो लार्सन एंड टूब्रो उस कैटेगरी की चार्ट में है तो हम आज लार्सन एंड टूब्रो में रकम नहीं डालेंगे, क्योंकि दिमाग सबके पास 1300 ग्राम का ही है, कोई का 1350, कोई का 1250 है। तो ब्रेन कितना लोड लेगी? 20 स्क्रिप्ट से ज्यादा ले नहीं सकती। तो हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स की तरफ भागने के बजाय हम पकड़ेंगे जो पकड़ के बैठे हैं दबोच के, डिफेंस, रेलवेज, बाकी के पीएसयूज। एक भी पीएसयू का स्टॉक नहीं दिख रहा है जिसको शॉर्ट करके पैसा बन सके। शॉर्ट करने वाले की बैंड बच सकती है, ऐसी चार्ट है। सरकारी तेजी है भयंकर। दूसरी तरफ कंज्यूमर के स्टॉक्स, मान लो अगर कोई कारण से टैक्स के स्लैब्स घटेंगे तो कुछ नहीं है, लोगों को लॉजिक चाहिए। लॉजिक है चाहे नहीं, वो लॉजिक लगा देंगे। ब्रिटानिया नेस्ले लेने भाग जाएंगे लोग कि भैया बिस्कुट ज्यादा खाएंगे लोग क्योंकि इनकम टैक्स की स्लैब चेंज हो गई। इस तरह से मार्केट के इमोशनल रिएक्शंस आते हैं। तो थोड़ा सा आगे पीछे जो भी हो अनुज, मैं आज मेटल्स के स्टॉक पे एनर्जी को कंज्यूम नहीं करूंगा, क्योंकि स्टील में जिस तरह की बड़ी तेजी लगती है उसके लिए बजट में कुछ नहीं आ पाएगा। उसके लिए सरकार को अलग से एंटी डंपिंग ड्यूटी देनी पड़ेगी जो बजट के बाद आ सकती है। तो क्या नहीं करेंगे? आसान है। हम इंजीनियरिंग और मेटल्स और आईटी के स्टॉक्स को नहीं लेंगे आज, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में भी जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर में लार्सन एंड टूब्रो जैसा स्टॉक बढ़ गया, हो सकता है 4-5% और बढ़े। इन सबको हम बाद में फिर किसी पुलबैक में लेंगे। आज की तेजी सरकारी तेजी, हमारा मन यही है, चलेगा सब कुछ। सुशील जी, जिस तेजी को आपने सरकारी तेजी का नाम दिया यहाँ पे, अभी जरा डिफेंस पे एक बार दो राय रखिएगा। मसगांव डॉक को देखिए, HL, BL, क्या लग रहा है यहाँ पर आपको? 100 शेयर बेचने का नहीं है। अगर आप मेरे को अपने पैसे उधार दे दो ब्याज पे तो मैं उनको भी लगा दूंगा इसमें। ठीक है, आप हम दे नहीं सकते। ऑलरेडी काफी पैसे हैं सुशील जी, हमसे क्यों लेंगे आप? सुशील जी को इतना पैसा की पूछे, हम क्या देंगे उसको, है ना? मतलब डिफेंस के स्टॉक में 100 शेयर बेचने का नहीं है, जहां से जितना पैसा मिले लगाते जाओ। ओके, खैर देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, उधार लेके पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी। और ये मतलब सिर्फ एक मेटाफोर की तरह यूज करिए इसको। और चाहे कोई आपको कितना भी अच्छा शेयर बताए, दो चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। एक तो कभी अपना घर बेच के पैसा मत लगाइए, और एक उधार लेके पैसा कभी मत लगाइए। ये सिर्फ वो कहने के लिए वो होती हैं चीजें जो हम कह देते हैं, बाकी वरना ये चीजें कभी नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। इवेंचुअली स्टॉक मार्केट ही है, क्या भरोसा है किस करवट बैठेगा, तो इसके लिए। लेकिन एक काम करते हैं। अच्छा प्रकाश जी, आपको अभी के लिए थैंक करने का टाइम हो रहा है, तो उससे पहले एक आखिरी कमेंट आपकी, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो बजट में जो अभी हमसे छूट गई हो, जो आप देखना चाहेंगे, या कोई एक और पर्टिकुलर कोई स्टॉक या सेक्टर व्यू जो आप देना चाहते हैं? जस्ट टू कंटिन्यू, जो गुरमीत से वीरू की बात हो रही थी डिफेंस में, डिफेंस में पीएसयू को छोड़ के बहुत सब एक्टिविटी है। और डिफेंस में जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ज़्यादा होते जा रहा है, ऑटोमेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो जो गोला बारूद वाला काम था वो एक साइड में रह गया है। ऑफकोर्स सोलर इंडस्ट्रीज को उसमें फ़ायदा जरूर है, बट जो नया वॉरफेयर जो हो रहा है ड्रोन्स को लेके, इसको लेके, तो एक छोटी सी कंपनी है, किसी कंपनी में ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहेगा, और अगर डिफेंस में कुछ आता है नहीं आता है फिर भी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, इसका नाम है DCX सिस्टम्स। अब कंपनी करती क्या है? बेसिकली हार्नेसेस बनाती है, वायरिंग सिस्टम्स बनाती है फॉर बोथ एरोस्पेस भी और डिफेंस भी, और इनको अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। अब कंपनी रेवेन्यू तो बहुत अच्छा कर लेती है, अब पिछले साल 1400-1500 करोड़ किया, प्रॉफिट से 5% है, लेकिन अब मार्जिन प्रोफाइल जो है बढ़ेगी, इंप्रूव होगी, क्योंकि ऑर्डर का नेचर चेंज हो रहा है। तो अगर कुछ आ गया डिफेंस पे तो ये भी होगा, पर गवर्नमेंट बैक नहीं है। चलिए प्रकाश जी, अभी के लिए शुक्रिया आपको। राहुल, आपको भी अभी के लिए शुक्रिया। अपना बर्थडे एंजॉय करिए। 1 बजे आप दोनों वापस हमारे साथ जुड़ेंगे। गुरमीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सिर्फ 1 बजे तक बर्थडे एंजॉय कीजिए, फिर पैनल में आ रहा है। हाँ, फिर पैनल में वापस आना है। बिल्कुल। और एक बार जरा सुशील जी के पास चलते हैं वापस। सुशील जी, कोई बजट के लिए कोई रॉकेट आइडिया लाए क्या? पूरा बाजार ही रॉकेट है जी। देखिए क्या है कि अगर थोड़ा सा संयम आप रखेंगे, क्योंकि एकदम से रोज रॉकेट खाने की भी जो आदत है ना, वो मतलब उसमें बड़ी समझदारी की चीजें भी छूट सकती है। मतलब आप साल भर का 6 महीने का व्यू लो, बाजार ने 6 महीने में जितना करेक्शन करके अपने आप को हम्बल डाउन करना था कर लिया। लोगों के सबके जो ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस, सब कुछ क्लीन्ड आउट है।
गवर्नमेंट भी जो है अब रीजनेबल हो चुकी है, गवर्नमेंट का भी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस क्लीन आउट हो गया पिछले चुनाव के नतीजों में। तो एक सेंसिबल मैच्योर्ड गवर्नमेंट एंड गवर्नड एंड ए स्टॉक मार्केट दैट हैज बिकम रीजनेबल, तो सब कुछ रियलिस्टिक और रीजनेबल हो चुका है। और मेरे को लगता है सारे संसार में भी ट्रंप के आने पर जो लोगों को थोड़ी अनर्विंग हो रही है, तो ग्लोबल ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा रियलिस्टिक हो रहा है। टैरिफ्स अगर लौटेंगे तो अच्छी बात है, हमारे को भी अपनी मेटल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगाने मिल जाएगा। अगर यूएस डॉलर एकदम से एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुका है, तो वो यूएस डॉलर का अगर करेक्शन होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट भाग जाएगा। तो मैं सिर्फ बजट के ऊपर एकदम अगले 2-3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अगर खाली दांव लेने की कोशिश करता अनुज, हालांकि मैंने आपके सवाल का उत्तर न देके कुछ और बात करी है, तो वो शायद जितना बड़ा मौका हमारे साथ बन रहा है उस मौके के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो बजट यहां से एक सेंटीमेंट को घुमाने की चीज बन जाए, और बजट स्पेसिफिक मतलब कोई एक आध स्टॉक पकड़ में आ गया। देखिए ज्यादातर पॉलिसी तो बजट के बाहर होने लग गई है, बजट एक मैक्रो इंटेंट की बात होने लग गई है बजट में। वो मैक्रो इंटेंट अगर मेरे को दिखे गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स के ऊपर हम्बल ही रहती है, अग्रेशन नहीं आता है वहां, जिसकी चांस कम है, पर फिर भी वही एक सावधानी की मेरे को जरूरत है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेंडिंग को बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव चीजों में ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है, जो गवर्नमेंट का पुराना ट्रेंड है, और अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट लीनियंट हो जाती है कि डायरेक्ट टैक्स पेयर्स के साथ थोड़ा सा इनकम टैक्स को लिबरल कर दे, मेरे लिए तो एज ए स्टॉक मार्केट के सिटीजन के लिए 6 महीने में स्टॉक मार्केट की गर्मी निकल चुकी है, सबके चेहरे उतर गए हैं, हाँ मुंह सूखे हुए हैं सबके, ये इतना भी आ जाएगा ना मेरे लिए इनफ है यहाँ से एक तरफा तेजी के स्टार्ट होने में, और उसमें सब कुछ आएगा फिर। बिल्कुल, खैर ये बात तो है। मुंह तो सबके सूखे हुए थे, पिछले हफ्ते तक तो सूखे हुए थे, मंडे तक तो मैं बता दूं आपको सुशील, मंडे तक तो ये हालत हो गई थी कि अगर वो ट्यूसडे से अगर मार्केट ने वो रिकवरी नहीं दिखाई थी तो मैंने तो वीरू को बोल दिया था कि कल से मैं नहीं आऊँगा, तुम ही संभालना बाकी शोज, क्योंकि मेरी खुद की एक जो एनर्जी थी ना वो खत्म हो गई थी मंडे तक, मार्केट इतना गिर गया था। तो उसके बाद तो खैर सुशील बहुत बहुत शुक्रिया एक समा बांधने के लिए, और एक बजट के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी और तब आपसे दोबारा बात करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, और उसके बाद जब हम जुड़ेंगे तो हमारी बजट ग्रैंड जूरी भी हमारे साथ जुड़ने वाली है इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये देखिए आपको स्क्रीन पर सब दिखाई देंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर हम लौट रहे हैं वापस। सर मुझे क्रिप्टो करके लाइफ बनानी है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस चाहिए? हाँ। कॉन्फिडेंस चाहिए? Come on, you have to land it. कॉन्फिडेंस चाहिए? कैप्टन, इन्होंने सीखा है इसलिए ये कॉन्फिडेंट है। अगर आपको क्रिप्टो में कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्रिप्टो सीखना होगा। CoinDCX क्रिप्टो कोच, लर्न करो, क्रिप्टो करो। सर आप स्माइल कर रहे हैं? मैंने भी सीखा है। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. पढ़ाई में लड़कियों के नंबर अक्सर ज्यादा ही आते हैं, इसलिए SBI देता है हर नारी को एजुकेशन लोन्स 0.5% कम इंटरेस्ट रेट्स पे, ताकि मास्टर्स के लिए विदेश जाने वाली लड़कियों का नंबर भी ज्यादा रहे। SBI, बैटिंग फॉर नारी शक्ति। In the heart of the jungle roams the finest creature, and through the chaos of the sparkling city lights, I am reminded of the timeless valor of the majestic tiger. In life's wild journey, we have one shot to thrill. And when done flawlessly, we unwind and allow our spirits to rejuvenate. Royal Ranthambore, India's finest, yet. Hi. Surprise! मार्केट भी ऐसे ही अच्छे बुरे सरप्राइजेस देता है ना। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आज ही इन्वेस्ट करें। ये मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से इक्विटी और डेट को बैलेंस करता है। स्टार्ट अ सोचा समझा SIP इन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स टुडे। म्यूचुअल फंड्स निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक्सिस म्यूचुअल फंड।
बजट से आम लोगों की बड़ी उम्मीद होती है कि सरकार टैक्स कटौती का उनको तोहफा दे। एक शब्द जो आप बार बार सुनते हैं वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। अब बचे हैं सिर्फ 25 मिनट बजट आने में। कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 8वीं बार लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। उससे पहले बजट और बाजार पर हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं। बजट ग्रैंड जूरी में हमारे साथ होंगे कोटक एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह, साथ ही एनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ नीलेश शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मार्सलस इन्वेस्टमेंट के मैनेजर्स एंड फाउंडर एंड को सीईओ सौरभ मुखर्जी हमारे साथ हैं। टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ स्टूडियो में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर सीईओ गुरमीत चड्ढा भी बने हुए हैं। और एक मैं जो डिस्क्लेमर बार बार देता हूं, क्योंकि दोनों नीलेश हमारे साथ रहते हैं, तो इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूं। पिछली बार भी मैंने कहा था, जब मैं नीलेश भाई करके बात करूं तो कोटक वाले नीलेश जी के लिए, और जब मैं नीलेश जी के बात करूं तो हमारे स्टूडियो में जो बैठे हैं एनविजन वाले, वो उनके नीलेश के लिए। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो बजट है ये आप अपनी हर भाषा में सुन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में तो होगा ही, लेकिन हमारे जितने भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपकी भाषा में बजट उपलब्ध होगा। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, पाजी पंजाबी में भी है। तो पंजाबी में अगर बजट आएगा तो क्या कहेंगे वैसे? अच्छा हुआ तो चक दे फट्टे। चक दे फट्टे, चलिए तो चक दे फट्टे की तैयारी हो रही है यहाँ पर बजट के लिए। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग, बताइए क्या चक दे फट्टे वाला बजट आ सकता है? और गुजराती में क्या बोलेंगे आप? ગુજરાતીમાં મેં કહીશું કે બહુ સારું બજેટ છે। સારું બજેટ છે, चलिए। सो मार्केट की उम्मीद यही है कि इस बजट में कुंभ मेले जैसा त्रिवेणी संगम देखने को मिले। आपने पहले कहा था 4.5% फिस्कल डेफिसिट FY 26 में होगी, तो उसे ऑनर करिए। दूसरा, अर्बन कंजम्पशन थोड़ा डगमगा रहा है तो उसे सपोर्ट करिए, चाहे टैक्स में रियायत दीजिए, चाहे किसी और तरीके से अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा दीजिए। दूसरा, प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा बैकफुट पे खेल रहा है, तो गवर्नमेंट कैपेक्स जैसे आपने दिसंबर के महीने में खर्चा किया उस पेस पे अगले साल भी बढ़ाते रहिए। अब जब खर्चा करना है और फिस्कल डेफिसिट कम करनी है तो रिसोर्सेस रेज करना जरूरी है। टैक्स नेट में जो लोग हैं उनके ऊपर ऑलरेडी बर्डन ज्यादा है, तो उनके ऊपर और दायित्व मत डालिए। टैक्स नेट के बाहर बहुत बड़ी मछलियां घूम रही है, उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आइए। दूसरा, डाइवेस्टमेंट हम हमेशा, चाहे किसी भी प्रकार की मार्केट हो, अपने टारगेट को अचीव नहीं करते, तो इस बार थोड़ा डाइवेस्टमेंट के ऊपर फोकस करिए। तकरीबन 10% ऑफ मार्केट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो थोड़ा बहुत पैसा वहां से रेज करिए। तो नॉन टैक्स से और टैक्स कंप्लायंस से पैसा रेज करिए, निवेश करिए, अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा दीजिए और फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करिए। बस इतना त्रिवेणी संगम कर दे तो आई एम श्योर गुरमीत कहेगा चक दे फट्टे, और नीलेश एनविजन वाला भी कहेगा सारू बजट छे। बस इतना, वो कहते हैं बस इतनी जरूरत है, इतना ही चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो सुबह जब पापा पूछते थे कि क्या चाहिए, पापा वो एक बाइक दिला दो, उसमें हर महीने पेट्रोल भरा दो और थोड़ी सी पॉकेट मनी दे दो हर महीने, बस इतना ही चाहिए मुझे, उससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। अच्छा सौरभ जी, वैसे आप कौन से वाले बंगाली हैं? जो बांग्ला समझते हैं वो वाले बंगाली, या फिर जो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं वाले बंगाली? बंगाली भी थोड़ी बहुत बांग्ला जाती है, थोड़ी बहुत बांग्ला समझ लेते हैं। चलिए, खैर जोक्स असाइड, क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? देखिए, आई थिंक मिडिल क्लास के ऊपर भयंकर प्रेशर है, काफ़ी बड़ा स्क्वीज़ है, खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी की ग्रोथ शायद उतनी नहीं है जो पहले थी। सो एक मिडिल क्लास टैक्स कटा जाए तो मज़ा आ जाए। अप टू 10 लाख, करीबन 80% हमारे इनकम टैक्स फाइलर्स 10 लाख से कम कमाते हैं, तो वहाँ पे अगर रिलीफ आ जाए तो मज़ा आ जाए।
डीरेगुलेशन पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने काफ़ी कुछ कहा येस्टरडे कि गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ द वे, वैसा हो जाए तो मज़ा आ जाए। कुछ डीरेगुलेशन का अगर इंटेंट भी सुनने को मिल जाए बजट में, बिकॉज आई थिंक छोटे बिजनेस के लिए, लघु उद्योग के लिए काफ़ी सारा रेगुलेशन, काफ़ी सारे टैक्सेस, कोड्स बन चुके हैं, और कम घटा दिया जाए तो कम कर दिया जाए तो बढ़िया होगा। एंड फाइनली आई थिंक जो सबसे अनोखा एस्पेक्ट रहा है पोस्ट कोविड खर्चे का, कि कैपेक्स को 30% से बढ़ाया गया है प्रति वर्ष मोटा मोटी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को केवल 5-6% से बढ़ाया गया है मोटा मोटी। ये जो दिशा है खर्चे का, मेरे ख्याल से इसको चेंज करना चाहिए, नहीं तो जो लोअर इनकम स्ट्राटा है उसमें ज़बरदस्त पेन हो रही है। सो आई एम होपिंग टू सी कि कैपेक्स ग्रोथ इस बार 10-15 से नीचे आ जाए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रोथ, मतलब कि खर्चा एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, वो डबल डिजिट में आ जाए। नीलेश जी, आपकी राय क्या है? मतलब आप कैसे रीड कर रहे हैं, मतलब बजट से एक्सपेक्टेशन, और ये बजट 26 पे नहीं आ रहा है, ये 23,500 पे। अच्छा, पिछला बजट पीसी प्राइस पे आया था, है ना? 23,500 पे बजट आया था वो भी। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या चेज कर रहे हैं आप इस वक्त? पहली एक्सपेक्टेशन है डू नो हार्म। मतलब अगर 26,000 होता तो शायद टैक्सेस बढ़ जाती, शायद 23,000 है तो शायद टैक्सेस नहीं बढ़ेंगी। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि टैक्सेस और कम किए जाएं, सिर्फ मिडिल क्लास पे नहीं, बट जो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी टैक्स रेट्स जो बढ़े, पिछले कई वर्षों में बढ़ी है टैक्स रेट्स, वो उसमें कटौती आए, या शायद कई जगह अगर तुमको हटानी भी पड़े तो हटानी भी चाहिए। शायद बजट वो माध्यम नहीं है, लेकिन जो जीएसटी के जो टैक्स रेट्स हैं उनको भी रैशनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। जो कई टीडीएसएस के मल्टीपल एप्लीकेबल रेट्स है उनको भी रैशनलाइज करना ज़रूरी है, सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। जो ओवरऑल बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे भी हो सके वो करना चाहिए। और उसके अलावा जो 3 सेक्टर्स है, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर कंटिन्यूड फोकस, कंटिन्यूड एम्फेसिस और कैपिटल एलोकेशन, और अगर खर्चे बोले तो खर्चे या इन्वेस्टमेंट बोले तो इन्वेस्टमेंट, बट वो सब पे कंटिन्यूस फोकस रहना चाहिए। तो एक तरफ ग्रोथ पे आपका फोकस रहना पड़ेगा और दूसरी तरफ किसी भी तरह टैक्सेस को रैशनलाइज कीजिए। ये दो जो कॉम्बिनेशन है वो मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी, टैक्सेस की बात हो रही है तो आपका क्या व्यू रहेगा? स्कोप है क्या फाइनेंस मिनिस्टर मैम के पास कुछ हमारे टैक्सेस कम करने का? नमस्कार अनुज, बिल्कुल बिल्कुल स्कोप है। न्यू रेजीम फाइनेंस मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है। 2/3 टैक्स पेयर्स अब न्यू रेजीम में आ चुके हैं, हम सब जानते हैं। ओल्ड रेजीम को थोड़ा सा सौतेला सा बना दिया गया, उस पर अब छेड़खानी नहीं होती, शायद वो जाने वाली है अभी या आने वाले कुछ सालों में। तो मुझे लग रहा है कि न्यू रेजीम को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स 8-9 करोड़ के आसपास हैं। जो इसमें से लोग असल में टैक्स देते हैं वो 2-3 करोड़ के बीच में है। तो वो 2-3 करोड़ 20-22 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कराते हैं। मैंने उनको वीआईपीज कहा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, दे आर ब्लू आइड पीपल, यू नो। उनको उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आप उन्हीं लोगों से बार बार टैक्स लें, उन्हीं लोगों से और ज़्यादा टैक्स लें, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल मैं नीलेश भाई की बात से भी सहमत हूँ कि बहुत सारी मछलियाँ बाहर घूम रही हैं, उनके लिए नेट बिछाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जैसे बड़े किसान हैं, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, शायद उसको ना ही छेड़ा जाए, पर ऐसा मेरा मानना है कि जो बहुत बड़े किसान हैं उनके ऊपर अब इट्स हाई टाइम कि आप एग्रीकल्चर टैक्स टॉप लेवल के किसानों पर भी लगाएं, और बहुत सारे लोग बाहर टैक्स नेट से उनको टैक्स में लाएं। न्यू रेजिम की बात करें तो अनुज, मुझे लगता है कि स्लैब 3 लाख से शुरू होता है, 3 की बजाय 5 लाख करा जाना बहुत रैशनल रहेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये सच है कि ज्यादातर टैक्स पेयर्स 10 लाख से नीचे के हैं, तो उससे टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में उतना फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स का फर्क पड़ जाता है। और उसके अलावा सैलरी वाले ज्यादा मार खाते हैं, सैलरी वालों से ज्यादा टैक्स भी आता है। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको दी थी न्यू रेजिम में, वो 1 लाख करना उसके लिए मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर कर दी जाए। और अभी मैं प्रधानमंत्री जी जब घुस रहे थे अपना पार्लियामेंट सेशन का कुछ इनिशियल बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मिडिल क्लास पे महालक्ष्मी की कृपा रहे। तो मुझे लगता है महालक्ष्मी की कृपा यही हो सकती है कि उनको कुछ टैक्स में रिलीफ आना चाहिए। इसके अलावा अब मिडिल क्लास की डेफिनेशन भी मुझे लगता है अनुज के चेंज हो गई है। अब पहले 5-6 लाख को मिडिल क्लास देखा जाता था, अब 15 लाख तक आप आराम से मिडिल क्लास ऊपर के लेवल पे बात कर रहा हूं, आप अज्यूम कर सकते हैं। तो 15 लाख के बाद आप 30% लगाना शुरू कर देते हैं। इस लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर देना चाहिए, क्योंकि 30% आप 15 लाख से लगाते हैं, और उसके अलावा आप 7-7.5 लाख तक एक 87A की रिबेट होती है 25,000 रुपए की, वो भी अब बढ़ा के 10 लाख तक कर देनी चाहिए। तो न्यू रेजिम अगर दिल के करीब है वित्त मंत्री के, तो मुझे लग रहा है उस न्यू रेजिम में ही उसको और लुभावना बनाया जाए, इससे और ज्यादा लोग न्यू रेजिम में आएंगे और आपकी जो ओल्ड रेजिम है वो रिडंडेंट होती जाएगी,
वो ऑटोमेटिकली फेड आउट होती जाएगी, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे पिछली बजट में, मैं अनाउंसमेंट सुनी थी, आप ही के चैनल पे था, और मुझे लगता है उसकी भी कुछ हमें सुनने को मिल सकता है कि एक बहुत सिंप्लीफाइड, आसान, सेल्फ कंप्लाइंट, आप खुद ही पढ़ के और आसानी से टैक्स दे सकते हैं, आपको बार बार टैक्स एक्सपर्ट्स के पास ना जाना पड़े, कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो आप जाइए, वरना आप ना जाइए। तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में आज कुछ सुनने को मिलना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा कदम होगा, कम से कम उसके ट्रेसेस अनुज जरूर इसमें आने चाहिए। बिल्कुल, उसके कुछ एक्सपेक्टेशन है। वैसे 75,000 से 1 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर बढ़ भी गया तो 25,000 रुपये पर आप टैक्स सब बचाएंगे, 7,500 रुपये साल का, मतलब 5,600 महीने का। क्या करेंगे इस धनराशि का। लेकिन एक चीज़ बताऊं, शरद जी ने कही कि 15 लाख वाले मिडिल क्लास में, मुझे तो फिर आज भी ना फीलिंग मिडिल क्लास की होती है वैसे, मतलब फ्रैंकली जो 10-15 साल पहले फीलिंग थी ना, वही आज भी फीलिंग होती है। खैर, एक बार नीलेश भाई के पास चलते हैं और जानते हैं कि और यहाँ से मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि मार्केट में अब इस समय थोड़े से पंख लगे, खासतौर से मिड कैप्स में। नीलेश भाई, पिछला 1 महीना 2 महीना ब्रॉडर मार्केट के लिए काफ़ी खराब रहा, और मुझे बार बार जब भी मैं बात करता हूँ मुझे वो आपका वो कर्व याद आता है जो आपने मार्केट के लिए कहा था कि कर्व ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे हो गया था। तो अब पिछले 2 महीने में क्लियरली उसमें बहुत ब्रूटल सेल ऑफ आया। क्या इस बजट के बाद वो सेल ऑफ वापस रिज्यूम होगा, या अब वो जो जितने एक्सेसेस निकलने थे वो निकल चुके हैं? अनुज भाई, मुझे लगता है कि इस बजट में अगर हम फॉरेन निवेशकों को विश्वास दिला पाए कि हमारी ग्रोथ बाकी देशों के सामने अच्छी रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी, और उसका बेनिफिट कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिखेगा, तो होपफुली उन्होंने जो बेचा है उसके ऊपर वो शायद सोचेंगे। आज की तारीख में अनुज भाई हम देख रहे हैं जो बिकवाली भारत में हो रही है वो एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट एज एन एसेट क्लास में हो रही है। यूएस मार्केट ने इतना अच्छा किया है पिछले 15 सालों में कि लोग इमर्जिंग मार्केट बेच के यूएस में जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की वजह से भी थोड़ा उस ट्रेंड को बढ़ावा मिला है। तो हमें इमर्जिंग मार्केट से अलग होना है, लोगों को ये कन्विंस करना है कि भाई बाकी इमर्जिंग मार्केट एक तरफ और भारत एक तरफ। अब इस चीज को एस्टैब्लिश करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट बजट और क्रेडिट पॉलिसी ये दोनों से हम इस चीज को बढ़ावा दे पाएंगे। मार्केट मेरे हिसाब से धीरे धीरे बॉटम आउट हो जाएगा अगर बजट और क्रेडिट पॉलिसी ग्रोथ ओरिएंटेड रही तो। अच्छी बात आपने कही। और नीलेश जी और सौरभ, क्योंकि आप दोनों सेल साइड पर रहे हैं और काफ़ी एफआईएस के साथ आपका एक समय था जिसमें काफ़ी इंटरेक्शन होता था, क्या तंग कर रहा है एफआईएस को? मैं दोनों से आपसे व्यू जानना चाहूँगा। नीलेश, पहले आप बता दीजिए क्या एफआईएस को तंग कर रहा है और क्या बदल सकता है? तो जो तीन रीजंस जो मेरे ध्यान में आती है, पहली बात तो ये है कि जैसे नीलेश ने बताया कि जो एक होम मार्केट ज़्यादा अच्छी कर रही है, खास करके पिछले 1 साल में। तो अगर होम मार्केट ही अगर अच्छी कर रही है तो आपको देश के बाहर कहाँ जाना है। मतलब यही बात होगी कि आप इंडियन इन्वेस्टर और इंडिया मार्केट इतनी अच्छी करी तो आपको जाके नाइजीरिया में क्यों इन्वेस्ट करना है? बिल्कुल मतलब उस तरह का जो अगर सिंप्लीफाई बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात यह है कि वैल्यूएशन, मतलब जो हिस्टोरिकल एवरेज जो था उसके कंपैरिजन में हम प्रीमियम पे चल रहे थे। जो पिछले 3-4 महीने के करेक्शन है उसमें वो प्रीमियम चला गया है, तो हम अभी थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल एवरेजेस के लाइन में है। तीसरी बात, जो कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना है, और मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ऐसा वो उनका कहना है कि बड़ी मार्केट्स में एज अ फॉरेनर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और इंडिया एक बड़ी मार्केट है, या शायद एक बहुत यूनिक मार्केट है जहाँ पे शायद आपको एक फॉरेनर की हैसियत से आपको टैक्स देना पड़ता है। मेरे हिसाब से वो अभी तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जब तक आपका ग्रोथ सुपीरियर था, आपके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे और रिटर्न्स आ रहे थे मार्केट में। जैसे ही आपकी ग्रोथ थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है, वैल्यूएशंस रिलेटिवली हायर है, और अगर रिटर्न्स नहीं आ रहे तो ये जो सारी बाकी की जो चीज़ें हैं वो एक इरिटेंट बन के आ जाती है, और ये एक वजह बन जाती है उनके लिए कि हम इसलिए निवेश नहीं करना चाहते या इसलिए हम लोग बेच रहे हैं। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये तीनों रीजंस है जो कभी भी इंटरेक्शंस होता है तो ये तीनों रीजंस उभर के आते हैं। सौरभ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, या फिर क्या बदले तो एफआईएस वापस आए भारत में? आई थिंक टू बी फेयर, सिर्फ एफआईआई को नहीं, डोमेस्टिक निवेशक को भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर देखें जिस प्रकार का अर्निंग स्लोडाउन दिखाया लास्ट 5 क्वार्टर में, राइट, ये सबसे तगड़ा अर्निंग स्लोडाउन है मेरे करियर का
अगर हम लीमन ब्रदर्स ग्रेट GFC को और कोविड को एक्सक्लूड कर दें, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी देखा नहीं कि 30% EPS ग्रोथ निफ्टी का 5% बन जाता है 5 क्वार्टर में। तो ये तगड़ा स्लो डाउन है अर्निंग्स में। मेरे ख्याल से उतने फटाफट ही अर्निंग स्लो डाउन जाएगा नहीं, और उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको मद्देनज़र रखते हुए इस अर्निंग स्लो डाउन को, इकोनॉमिक स्लो डाउन, अर्निंग स्लो डाउन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए तो वैल्यूएशन इंडिया में अनसस्टेनेबल है। तो जब तक मार्केट और सस्ता नहीं हो जाता, वो विदेशी निवेशक हो या डोमेस्टिक निवेशक हो, सबको सावधानी बरतनी चाहिए। गुरमीत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? क्योंकि सबसे बड़ी दुखती रग मार्केट की यही रही है। रोज मतलब कि कई बार हम कहते हैं ना और कितना ही बेचेंगे, तो एक बार किसी ने मुझे भेज दिया था कि ये चैलेंज नहीं है, ये मतलब जनरली पूछ रहे थे, क्योंकि हमने जब बोला ना कितना और बेच सकते हैं, वो और 7,000 करोड़ अगले दिन बेच देते हैं। वो किश्त बन गई थी एक रोज की। अनुज, एक थोड़ा सा एरोगेंस भी था, हम बीच में बोलने लगे थे हमें जरूरत नहीं है। हाँ। और आप देखिए 5,000 करोड़ का ऐसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लग गया है। 5,000 करोड़ का एक फिक्स कोटा लेके आते हैं कि इतना ही बेचना है। तो जो नीलेश ने बात बोली, पोस्ट टैक्स पोस्ट डॉलर रिटर्न निफ्टी का 10 ईयर US बॉन्ड से ज्यादा फर्क नहीं है। बॉन्ड से? हाँ, तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड 5% यील्ड देगा, मार्क टू मार्केट गेन देगा थोड़ा बहुत, तो आप 7-8% डॉलर टर्म में एक इजी ट्रेड बना सकते हैं अभी इस लेवल पे। 4.5% का यील्ड है, और आपका भी जो पोस्ट टैक्स पोस्ट डॉलर रिटर्न है, तो हमने वो 10 को 12.5 करके, मुझे लगता है हम कई बार ना पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाते हैं। बिल्कुल। फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर आ रहा है, रिस्क कैपिटल जा रहा है, और हम पंजाबी में बोलते हैं मन नीवा मत ऊंची। हम थोड़ा सा ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए, फॉरेन कैपिटल चाहिए हमें, हमारी डिपेंडेंस कम हुई है, ये अच्छी बात है। ये बोलना कि हमें जरूरत ही नहीं है, हम इमर्जिंग मार्केट है, हमें तो रिस्क कैपिटल को इज्जत देनी चाहिए। बट मैं सौरभ की बात से एग्री करता हूँ, स्लो डाउन है और ग्रोथ को रिवाइव करना चाहिए। अगर 8% ग्रोथ इंडिया अचीव नहीं कर रहा है तो हम अंडर अचीवर हैं। इतने पोटेंशियल के साथ अगर हम 8% ग्रोथ नहीं करेंगे और 11-12% नॉमिनल नहीं करेंगे, तो वो बाकी सब स्लोगन्स हैं कि हम विकसित बनेंगे या ये बनेंगे। तो मुझे लगता है ग्रोथ फोकस होना चाहिए, और ये रेटिंग एजेंसीज को प्लीज करने का जो हम कोशिश कर रहे हैं 10-15 साल से, उन्होंने नहीं प्लीज होना। तो आप अपना ग्रोथ चार्ट करिए, बाकी चीजें अपने आप फॉलो थ्रू करेंगी, ग्रोथ आएगी, सब कुछ आएगा। अच्छा नीलेश भाई, ये पासिंग जो अर्निंग सीजन था वो बैंकों के लिए वो कैसा लगा आपको? आरबीआई ने जो लिक्विडिटी की जो स्थिति काफी ड्राई हो गई थी, उसको कुछ हद तक एड्रेस करने की कोशिश की है, बट पासिंग नंबर्स कैसे लगे आपको इस बार के बैंकों के? बैंकों में कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है। जो मीठा है वो ये है कि उनके मार्जिन उतने करेक्ट नहीं हुए जितनी लोगों की अंदेशा था, एंड अब लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, तो जाहिर है जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ एकदम लो डबल डिजिट में है, वो थोड़ा वहां से इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज है कि होलसेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग में एनपीए अभी भी बहुत ही मतलब अच्छे हैं, एंड वहां पे ऐसा लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट डीलिवरेजिंग हुई है उसका सबसे ज्यादा फायदा बैंकों को एनपीए में दिख रहा है। जो कुछ खट्टा है वह है माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड लेंडिंग के बढ़ते हुए एनपीए, और जो बैंक के क्रेडिट कल्चर खराब है, जहां पे अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक बड़ी ज्यादा है, उनके मार्जिन के ऊपर, उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट होती दिखी है। बट अल्टीमेटली सारी चीजें वैल्यूएशन में आती है। तो कुछ बैंक है जो पिछले 3 या 5 सालों से वैल्यूएशन में डी रेट होते हुए ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां पे निवेश करने के लिए योग्य बनते हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसा लगता है कि निवेश करने का समय आ गया है, वैल्यूएशन आपकी फेवर में है, और आप बॉटम अप जिस कंपनीज में अनसिक्योर्ड लेंडिंग की रिस्क कम है वहां पे देख सकते हैं। जब एनबीएफसी का नाम आता है ना अनुज, तो गुरमीत ने मेरे को एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग। पत्नी का मैसेज आया ना, फोन आया ना, बजाज फाइनेंस का फोन जरूर आता है सबसे पहले, है ना। ये B2 पे आपका टेक क्या है इस वक्त? मैंने बोला था कि सुबह अलार्म की तरह 7 बजे फोन करिए, फोन जरूर आएगा सबसे पहले। नहीं, मुझे भी आता है बजाज फाइनेंस का फोन, उस बार गुरमीत याद आते हैं उस वक्त। तो कोई याद करे ना करे, वो लोग जरूर याद करते हैं। और मुझे अनुज किसी इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे किसी ने बोला था कि कुछ हद तक शायद इंटेंशनल भी था थोड़ा ना, ये जो ओवर हीटिंग थी, बहुत सारा पैसा, जो आपने लेवरेज की बात करी सुशील जी से, बहुत सारा पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन स्टॉक मार्केट तरफ भी डाइवर्ट हो रहा था। एफएनओ में भी लॉसेज हुए हैं। तो कुछ रेगुलेटर मुझे लगता है कॉन्शियसली भी स्लो कर रहा था अनसिक्योर्ड लेंडिंग को, बट मुझे लगता है वो कई बार माइक्रो मैनेजमेंट में आप दोनों तरफ एक्सेस हो जाता है। देखो, उम्र के जिस पड़ाव में हम हैं, आई डोंट थिंक 7 बजे आप दोनों में से किसी का भी फोन सुनना चाहते हैं।
खैर एनीवे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मार्केट का एक बार रुक करते हैं और थोड़ा सा हंसी मजाक इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि बाजार रिंग उतरने वाला है अनुज है ना। बिल्कुल, और देखिए बिल्कुल 6 मिनट बचे हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आएंगी और बजट पेश करेंगी। वैसे एक चीज़ है, बाजार थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है। पहले मतलब यही बाजार पिछले मंडे को क्या था और अब क्या है, मंडे को हम 22,800 पर थे निफ्टी पर, अब हम 23,600 पर हैं, तो करीब करीब 800 पॉइंट की अब हमने रैली देखी है वहाँ से। और मिड कैप देखिए क्या एकदम जो कंप्लीट कोलैप्स हो चुका था मिड कैप इंडेक्स, वहाँ पर एक अच्छे मूव्स आ रहे हैं। शरद जी, काफ़ी बातें हो रही हैं कि क्या कुछ एक्साइज टिंकरिंग होगी पेट्रोल डीजल को लेकर, क्या वहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि एक जब क्रूड ने बढ़ना शुरू किया था तब एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो उससे पहले एक्साइज बढ़ाई गई थी वो शायद एट सम स्टेज कट की जाएंगी, क्योंकि कभी लोअर क्रूड का फायदा तो मिला ही नहीं एक आम इंसान को, लेकिन उसके बाद जब प्राइसेस बढ़ने लगे तो महंगा तेल फिर भी खरीदना पड़ा। कुछ उसमें स्कोप है क्या? बिल्कुल स्कोप है अनुज, क्योंकि जिस तरीके से कैस्केडिंग इफेक्ट होता है फ्यूल प्राइसेस का ओवरऑल इन्फ्लेशन पर, और आपको पता है कंजम्पशन नीचे जाने का मेन रीजन या टॉप रीजन में से एक रीजन इन्फ्लेशन है कि लोगों को हाथ में बच नहीं रहा तो वो और सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी बचत नहीं हो पा रही है। तो सरकार के पास मौका है, बिल्कुल एक्साइज टिंकरिंग ओवर ड्यू है, होनी चाहिए। अगर फ्यूल प्राइसेस, अब क्रूड हम देख रहे हैं कि $80 से नीचे अक्सर रहता है, कभी कभार होता है 80 से ऊपर जाता है, और ओएमसीज का प्रॉफिट भी अच्छा रहा है, ओएमसीज की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है सरकार को करना चाहिए, सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, इसको जीएसटी में लाने का भी प्रेशर है, पर कम से कम जब तक जीएसटी में नहीं आता तो आप एक्साइज टिंकरिंग बिल्कुल करी जा सकती है, और अनाउंसमेंट आएगी तो बहुत स्वागत करने योग्य होगी। और इन्फ्लेशन के लिए लोग पूछते हैं कि भाई बजट में क्या किया जा सकता है, तो उन कदमों में से एक कदम ये हो सकता है कि आप एक्साइज को कम कर दें और पेट्रोल डीजल में थोड़ी राहत दें, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन पे इससे फर्क पड़ेगा। अनुज, बिल्कुल इसमें गुंजाइश है, क्योंकि जीएसटी तो हम जानते हैं जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत है, यहां पर एक पॉलिसी अनाउंसमेंट जीएसटी पे तो सुनाई दे सकती है, पर जीएसटी आप कहीं महंगा सस्ता कुछ हुआ वो यहां पर उम्मीद नहीं होती है। एक्साइज टिंकरिंग बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं और उम्मीद करके बैठा भी हूं, और लोग जनरल आम आदमी भी उम्मीद करके बैठा। और अभी मैं नीचे आपके टैग लाइन पढ़ रहा था कि आम आदमी का बजट होगा, तो आम आदमी के लिए मुझे लगता है पेट्रोल डीजल से अच्छी और कोई राहत नहीं होगी अगर इन्फ्लेशन को हिट करना है तो। बिल्कुल, ये मोदी साहब खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आम आदमी का बजट होगा, और बजट गरीब और किसानों की उम्मीदों का बजट होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। नीलेश भाई, पिछले बजट में एक चीज़ जो आई थी, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो आपको थोड़ी सी गलत लगी होगी, वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई थी गोल्ड के ऊपर, क्योंकि आपका तो खैर एक हमेशा से व्यू रहा है कि हम क्यों गोल्ड इतना इम्पोर्ट करते हैं। थोड़ी चर्चा चल रही है कि इस बजट में वापस उसको बढ़ा दिया जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो आप कैसे देखेंगे उसे? गोल्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो आप गोल्ड स्मगलिंग को बढ़ावा देते हैं, और उसके दूसरे कंसर्न से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो लोगों को सोने में निवेश करना और अच्छा लगता है। हमें अपना जो गोल्ड होल्डिंग है उसके बारे में अलग तरीके से सोचना चाहिए। जो गोल्ड ज्वेलरी है उसको तो टच करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ज्वेलरी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बट बहुत सारा गोल्ड लोगों की तिजोरी में और सेफ डिपॉजिट लॉकर में पड़ा है जो व्हाइट इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, जो ब्लैक इकोनॉमी का पार्ट है, वो हमारी फ्रोजन सेविंग्स है। गोल्ड के दाम बढ़े हैं और भी बढ़ते रहेंगे ऐसा लग रहा है, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स और अपनी हाउसवाइफ के बीच में एक कंपटीशन चल रही है, कौन सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदेंगे। और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हमारी हाउसवाइफ जैसे बन रहे हैं, एक बार सोना खरीदा तो बेचेंगे नहीं। तो हमें फोकस करना है सेफ डिपॉजिट लॉकर में और तिजोरी में पड़े अनअकाउंटेड गोल्ड को, वह भी काफी बड़ी मात्रा है। कैसे हम उसे इंसेंटिव देके मेन इकोनॉमी का पार्ट बना पाए। सरकार को टैक्स मिलेगा, लोगों की फ्रोजन सेविंग्स लिक्विड हो जाएगी, इकोनॉमी में घूमने लगेगी और ग्रोथ के लिए कैपिटल मिलेगा। तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके अगर एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आ जाए जिससे तिजोरी में पड़ा अनअकाउंटेड सोना पैरेलल इकोनॉमी से मेन लाइन इकोनॉमी में आ जाए तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा और ग्रोथ के लिए कैपिटल भी अवेलेबल होगा।
ओके, इस बीच मार्केट से डे हाई 49,805 निफ्टी बैंक और 23,593 यानी ऑलमोस्ट 23,600, यानी आप एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से डे हाई पर बजट स्पीच ले जा रहे हैं 10:59। कुछ ही देर में अब संसद की प्रक्रिया जब शुरू होगी उसका ट्रांसमिशन आपको दिखाया जाएगा और बजट स्पीच कुछ ही देर में। सौरभ, मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पे लेना चाहता हूँ। आप मिड कैप्स पे स्पेशली अर्निंग्स के बाद देखने के बाद इस बार आपका कन्विक्शन ये कोई बताया इस बार इस बजट इस अर्निंग्स के बाद? नॉन अर्बन में एक्चुअली उछाल आई है, राइट। अर्बन में जैसे काफ़ी आपके एक्सपर्ट्स ने बोला अर्बन में एक प्रेशर है, बट नॉन अर्बन में उछाल आई है। जिस प्रकार का दबाव 2021, 22, 23 में था नॉन अर्बन पे, वो काफ़ी हद तक घट चुका है। आप ट्रैक्टर के सेल देखें या जो रूरल फोकस्ड कपड़े बेचने वाले कंपनी हैं उनके नंबर देखें, डबल डिजिट में चल रहा है। सो वो एक ब्राइट स्पॉट है हमारे इकोनॉमी में, जहाँ ब्रॉडर इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, बट नॉन अर्बन। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1, ध्यान रखिएगा, बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमन जी का 8वां बजट पेश होने जा रहा है। चलिए चलते हैं फिर सीधा पार्लियामेंट। सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखे हैं। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education,
access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6
year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad and Masood. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst
for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focus product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees.
Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional
Infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce
the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years.
4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose.
A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week.
I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed
in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste,
the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year,
for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business. Employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing